हेलो, वेलकम टू साया कनेक्ट। हम कुछ ही मिनटों में स्टार्ट करेंगे। हेलो मिस्टर वंश। हेलो आमिर। तब तक आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कौन से पार्ट से हैं, इस कंट्री के कौन से स्टेट से आप लोग आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो वेलकम टू साया कनेक्ट। मैं डॉक्टर शिवांगी आज आप सबसे दवाइयों पे बड़ी बचत कैसे की जाए इसकी बात करने वाली हूँ। ये देखिए मिस्टर एंड मिसेस पपरेजा को, इन्होंने दवाइयों पे इतनी बचत कर ली कि वो अपने और अपने परिवार के लिए टाइम निकाल पाए और वो चीज़ें कर पाए जो वो हमेशा से करना चाहते थे। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आप थोड़ी और बचत कर पाएँ अपनी दवाइयों पे, तो आप क्या करेंगे अपने परिवार के लिए? प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए। तो मिस्टर एंड मिसेस पपरेजा का जो बिल था महीने का, वो 6,000 रुपये आता था एंड वो साया केयर के साथ सिर्फ 900 रुपये रह गया। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये हुआ क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस चूज किए जेनेरिक सब्स्टिट्यूट के। ये जेनेरिक सब्स्टिट्यूट सेम सॉल्ट की दवाई होती है जो आपकी पर्ची पे लिखी होती है और ये कम दाम पे आती है मार्केट में। जैसे अब दवाई के अंदर सॉल्ट होता है, वैसे ही जैसे आप जब ज्वेलरी खरीदते हैं और ज्वेलरी के अंदर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जिसका पैसा आप पे करते हैं, वैसे ही दवाई के अंदर सॉल्ट होता है जिसके लिए आप वो दवाई खाते हैं एंड वो आपको सही करता है। अब जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम, ये दवाई आपको डोलो के नाम से मार्केट में मिलती है 30 रुपए में एंड वहीं पे आपको और 1000 ब्रांड्स मिल जाएंगे जो कि जेनेरिक होंगे या और अलग ब्रांड नेम से आएंगे, जो कि अलग अलग रेट पे आपको बाजार में मिलेंगे। ये दवाइयाँ सेम सॉल्ट की होती है, मतलब उसमें पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम ही होगा, लेकिन इनके प्राइस में बहुत अंतर होगा। जैसे कि जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, साया केयर पैरासीटामोल, ये सब्स्टिट्यूट है डोलो का एंड ये आधे दाम में आपको मिल जाता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अब इसको थोड़ा गोल्ड से जोड़ते हैं, तो गोल्ड में जैसे आप अलग अलग ब्रांड की ज्वेलरी लेते हैं, जैसे तनिष्क हो गया, कल्याण हो गया, एंड ये अलग अलग ज्वेलरी में अलग अलग तरीके के हीरे जुड़े जड़े होते हैं या अलग अलग मेकिंग चार्जेस होते हैं एंड ये डिसीजन आप लेते हैं कि मुझे कौन सी सुंदर दिखने वाली ज्वेलरी खरीदनी है। लेकिन दवाई में तो ऐसा कुछ भी नक्काशी या मेकिंग चार्जेस नहीं होते, तो वहां पे आप इतना अंतर क्यों पे करते हैं? इसी को हम समझते हैं थोड़ा। अब डॉक्टर्स आपको ये जेनेरिक सब्स्टिट्यूट, जो आपका जो मेडिकल बिल है जिसको आधा कर सकते हैं, ये डॉक्टर्स आपको ये सब्स्टिट्यूट रिकमेंड नहीं करते। अब ये रिकमेंड आपको क्यों नहीं करते? आपकी पर्ची पे हमेशा डोलो क्यों लिखा होगा एंड वो जेनेरिक पैरासिटामोल क्यों नहीं लिखी होगी जो आधे दाम में आपको मिल जाएगी? इसकी दो वजह हैं। वजह एक है कमीशंस। तो डॉक्टर्स को कमीशंस मिलते हैं बड़ी मार्केटिंग कंपनी से वो दवाई आप तक पहुंचाने के, एंड इसीलिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी जो बड़े ब्रांड्स पे इनको बेच पाती हैं, वो बड़े रेट पे आपको जो बेच पाती हैं, वो डॉक्टर्स को उन पैसे से निकाल के आप उनको कमीशंस देती हैं। जैसे कि ये हम सुनते हैं मिस्टर मोदी जी से। दवाइयाँ पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए ज़रूरी है, जिसके वजह से आप एज अ कंज्यूमर आप पे करते हैं 20 रुपए की दवाई के लिए 300-400 रुपए तक।
तो मतलब कि 80-90% ज़्यादा आप पे करते हैं वो मार्केटिंग कॉस्ट के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ मेकिंग और क्वालिटी की बात करें, इनको जोड़ के आपकी दवाई का पैसा इतना है ही नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई बात कि दवाइयाँ महँगी हैं एंड वो महँगी दवाइयाँ आपको लिखी जा रही हैं। बट दूसरा रीज़न क्या है डॉक्टर्स आपको ये दवाइयाँ नहीं लिखते, वो है क्वालिटी। वो कहते हैं कि ये जो हमारी जेनेरिक दवाई है, इसकी क्वालिटी लो होगी। चलिए मान लीजिए कि क्वालिटी लो हो सकती है। फिर ये बड़े ब्रांड्स का क्या, जिनमें ये क्वालिटी इश्यूज़ भी आते रहते हैं, जैसे ये शेलकेल है, पैन 40 है, पैरासिटामॉल हो गई, ये सारी पैन डी हो गई, ये सारी दवाइयाँ सरकारी फेल रिपोर्ट्स में पाई गई हैं, जो महीने पर महीने निकलती हैं। लेकिन अगर क्वालिटी दवाई की खराब हो भी गई, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आइए देखते हैं। तो सन 2023 की बात है, जब जम्मू एंड कश्मीर में अनिरुद्ध के मम्मी-पापा, जो 2 साल का बच्चा था, उसके लिए डॉक्टर के पास गए, उसकी खाँसी और उस बीमारी के लिए पर्ची लिखवाने। डॉक्टर ने उनको बड़ी ब्रांड की प्रिस्क्रिप्शन दवाई दी, कफ सिरप। अब वो जाके जब अनिरुद्ध को उन्होंने पिला दी रात में एंड अगले दिन तक अनिरुद्ध की जान चली गई। ये क्यों हुआ? ये पता चला कि वो के कफ सिरप ही फेक थी। ऐसे ही कई बच्चों और की जान गई थी जम्मू एंड कश्मीर में इन्हीं फेक कफ सिरप की वजह से। एंड ये एक किस्सा है। यदि आप जाके अभी फेक मेडिसिन इन इंडिया सर्च करते हैं, तो आपको ऐसी कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जहाँ पे बड़े-बड़े ब्रांड्स भी फेल होते रहते हैं। एंड ये लेटेस्ट न्यूज़ हर महीने-महीने आती रहती है। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे आप इतना पैसा भी पे ना करें, लेकिन आप अपनी जान से खिलवाड़ भी ना करें, क्योंकि दवाई है, दवाई में सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सॉल्यूशन है टेस्टेड सब्स्टिट्यूट्स। जैसे आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसके अंदर आप सर्टिफिकेशन लेते हैं हॉलमार्क का एंड उसी को आप एज अ प्रूफ मांगते हैं कि ये गोल्ड मेरा सर्टिफाइड है एंड सेफ है। वैसे ही दवाई के, अगर दवाई को हम जांचें तो उसकी हम एक टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं एंड उससे वो प्रमाणित होता है कि वो दवाई सेफ है या नहीं है टू कंज्यूम। साया केयर में हम यही करते हैं। साया केयर में हम हर एक बैच को थर्ड पार्टी लैब्स में टेस्ट करते हैं एंड जब वो पास होती हैं तभी वो आपकी फैमिली के पास पहुंचती हैं, तभी हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। हम क्वालिटी रिपोर्ट्स आपको अपने एप्लीकेशन और वेबसाइट पे साफ दिखाते हैं। तो कोई भी दवाई आप लेने से पहले उसकी क्वालिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं एंड जब आपको ये भरोसा हो जाए तब आप वो दवाई खरीद सकते हैं। तो अंत में शेलकेल एक ब्रांड है विटामिन एंड D3 का, ये 137 रुपए का आता है। वहीं पे जेनेरिक सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं इसी सेम कॉम्पोजिशन के, जो कि मार्केट में आपको 10 रुपए से सस्ते से लेके महंगे तक आपको मिल जाएंगे। इन दोनों की क्वालिटी, चाहे वो महंगा है या सस्ता है, दोनों की ही क्वालिटी का हमें कोई अता पता नहीं है, क्योंकि शेलकेल भी फेल मिला गया है सरकारी रिपोर्ट्स में एंड जेनेरिक सब्स्टिट्यूट्स भी सेम, हमें नहीं पता क्वालिटी क्या है। वहीं पे अगर हम टेस्टेड सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो ये दवाइयाँ कम दाम पे मिलती हैं, लेकिन आपका, क्योंकि इनको टेस्ट किया गया है एंड क्योंकि इनकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि ये दवाई सही है एंड इससे आपकी कॉस्ट सेविंग भी होती है एंड आप सेफ दवाई भी खाते हैं। तो विद साया केयर काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं एंड गूगल आप करेंगे अभी साया केयर के नाम को, तो आपको कई रिव्यूज़ ऐसे दिख जाएंगे, जैसे मिस्टर तुषारकांत सिन्हा हैं या संजीव कुमार हैं। इन्होंने बहुत बचत करी है अपनी दवाइयों पे एंड बड़ी-बड़ी, जैसे तुषारकांत सिन्हा एक किडनी ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो दवाइयाँ क्योंकि टेस्टेड है इसलिए वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो भरोसे से ले पा रहे हैं। तो विद साया केयर इवन यू कैन स्टार्ट सेविंग सेफली नाउ। तो यदि आपके पास ऐप है या आप वेबसाइट पे हैं अवेलेबल, आप कोड यूज़ कर सकते हैं टेस्टमी 101 चेकआउट पे, जिससे कि आपको डिस्काउंट्स मिल सकें। And now I'll take up the questions and I'll also add Dhruv Mathur Gupta to the stage. And जो भी आपके questions हैं साया केयर से related या दवाइयों से related या substitutes, quality of medicine से related, please chat box में डालिए and we'll try to answer them.
Thank you, sir. We Yes, thank really you. appreciate your feedback. Chandrakant Bhasin ने कहा he is satisfied with side care. Thank you so much. तो हमारे पास काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं. हम क्वेश्चंस लेते हैं. मिस्टर विकास जी ने पूछा है कि जेनेरिक और ब्रांडेड में ज्यादा फर्क होता है क्या? ध्रुव, डू यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन? हिंदी में हो तो आप ही बता दीजिए. तो जेनेरिक और ब्रांडेड में फर्क कॉम्पोजिशन का नहीं होता है, लेकिन मार्केटिंग का और रेट का होता है. तो जहाँ पे आप सेम मतलब आप ब्रांडेड आपकी दवाई पे लिखा मतलब आपकी पर्ची पे डॉक्टर लिख के देते हैं, उसकी आप सेम जेनेरिक दवाई ले सकते हैं, वो आपको काफी कम दाम में मिल जाएगी. लेकिन यदि वो जेनेरिक टेस्टेड है, तो वो टेस्टेड सब्स्टिट्यूट मतलब अगर होगी, तो आप सर्टेन हो सकते हैं कि इसकी क्वालिटी सही है. तो इससे आप पैसे भी बचा सकते हैं, आप वरी फ्री वो दवाई सेफली खा भी सकते हैं. मिस्टर चंद्रकांत बसीर ने पूछा है, यू आर नॉट हैविंग ऑल मेडिसिन एग्जांपल डिक्सेसा. डिक्सेसा I mean, so Dizexa is it's a probiotic, a pre-probiotic. We do have a pre-probiotic, but not of exactly the same ingredients. So and because of that, we don't offer a substitute. We only bring in substitutes that we can test, and testing costs money. So there needs to be enough demand for it to bring it in. So we'll check into the demand of this, but you can keep checking the new arrival section on the app and website, and it will update any new drugs that we are planning to bring in and the price that we found for them. Is मिस्टर there a way मलाया to जी ने validate the lab reports that you publish on the website? I wish there was like a central government repository where you could just like go to and enter the report number, but there isn't. So what you could do right now is you could call the lab. Each report has a number, and just give them the report number, and they'll tell you which batch it is. That is one way. The lab's website is completely available. The owner's number is there, but I would recommend calling the like support number that's on the report. And then, yeah, you can talk to them and ask and cross verify that way. Ideally, hopefully, in the future, the government puts together a central repository for all lab reports so that at any time you can check any medicines report at any place. Yeah. Mr. Chandrakant ji ने कहा कि he is totally satisfied and has reduced the bill almost by 80%. Thank you, Mr. Chandrakant, for this feedback. And yes, we try our best in reducing your medical bills safely. I'm satisfied with the forward delivery times. I ordered 8th May from Kolkata and yet to receive the medicine. Please do something to improve your delivery time. Sir, we're trying our best. We work with third-party couriers like ShipRocket. ShipRocket is an aggregator. They aggregate Blue Dart, Amazon, ExpressBees, all of these various different courier companies, and we rely on them to deliver to you. We keep tabs on them and we call the moment something goes wrong. But since we don't have our own delivery fleet, we aren't completely in control of the delivery process. Hopefully, as we grow, we can set up warehouses in multiple locations across India, and that would significantly reduce the delivery time to most places. Right now, we're fairly quick around Uttar Pradesh and Delhi region because that's where our warehouse is located. But for further away regions, it does take some time. Accutret 10 mg, Mr. Pranav ji ने पूछा है. This is isoretinin 10 mg. Yeah, we have that. You इसका can लिंक search up मैं drug. डाल देती हूँ. Yeah, search up Draco 2111. एक्यूट्रेट मार्केट में 215 का आता है. ये हमारे प्लेटफॉर्म पे इसका टेस्टेड सब्स्टिट्यूट आपको 35 रुपीज में मिल जाएगा. इसका लिंक आप ड्रको 211 भी सर्च कर सकते हैं. अदरवाइज आई एम आल्सो पुटिंग इन द लिंक, यू कैन चेक इट.
घर पर 2 से 3 दवा स्टोर करने की। So he's asking कि what is the best way to store medicines which he has bought for 2 to 3 months? क्या सबसे सही तरीका, सबसे practical तरीका भी है? It's So about you medicine. should always. You want to take this? Okay, I'll take it. So you should try and store the medicine in a cool, shaded place with not too high humidity. You need to make sure that, or you should ensure that the temperatures stay below 25 degrees. I get that that's really difficult in India, but medicine isn't actually meant to go above that temperature. So if you can find some cool, shaded area, then you should keep it there. You can't have it go too low either. So earlier we used to think that maybe you should put it in a fridge, but going below 10, 15 degrees, that would also cause like an issue. So there's like an ideal temperature to keep it, an ideal humidity to keep it. Hopefully, what do we get in the future, and something that we are keen on developing, is some sort of storage container which is meant for keeping medicine in the ideal scenarios. Um, but that is, of course, something in the future. Right now, But you I will think need to find someplace that's 15 to 25 degrees and humidity at around 50, at least below 60% humidity. Is there anything you but want to if add, you have a Shivangi? room जहाँ पे AC है, then you can keep those medicines because अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वो दवाइयाँ आप अपने जहाँ पे जिस कमरे में AC अवेलेबल है एंड उस कमरे में रख सकते हैं, बट उसको एक अगर आप उसको निकाल के रखते हैं, मतलब उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए जिससे Yeah, उससे airtight, मॉइस्चर वगैरह definitely. उसमें ना आए. बट इफ यू मेंटेन दैट टेम्परेचर बिकॉज यूजुअली हो पाता है वो पॉसिबल, तो आप उनमें उसको रख सकते हैं अंडर दैट. Airtight container is very essential. Also, away from light. Make sure that you don't have any direct sunlight falling on the medicine. A lot of medicine degrades if you have it immediately in light. There's also this trend of people using pill boxes. I don't know what I like. I'm not a big fan of pill boxes personally, mainly because the pill boxes get really dirty. No one cleans it, no one sanitizes it, so you can get lots of things going in there. Additionally, you take out the medicine from its packaging, and the packaging is meant to keep it like a little airtight and keep air and moisture and all those things away from it. So if you are going to use a like a pill box, I would actually recommend, instead of like, take a pair of scissors, cut out the little goalie, but don't take it out of its like actual aluminum foil or blister packing or alu packing. You want to keep that exact cutting into the pill box. That would at least keep it a little bit safer. And to answer your question, content mafia, you can buy medicines for 2 to 3 months, but you have to ensure that you're keeping the medicines in a cool dark place, and I think then you'll be good. And humidity. Keep mindful of humidity. Cool dark dry place. रानी क्वीन ने पूछा है ब्रांडेड दवाई में अच्छे क्वालिटी पर कैसे भरोसा होगा, इसके बारे में बताइए. मैम जैसे हमने इस वेबिनार में बात करी कि ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों में ही क्वालिटी इश्यूज होते हैं, एंड दोनों की ही क्वालिटी मतलब क्या है, अच्छी है या नहीं है, हम नहीं बता सकते. एंड इसीलिए हम साया केयर में उसका ऑल्टरनेटिव देते हैं टेस्टेड सब्स्टिट्यूट्स, विच इज़ कि वो दवाई ब्रांडेड है या जेनेरिक है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, महंगी है या सस्ती है. अल्टीमेटली अगर वो टेस्टेड है तो वो सही है, एंड इसीलिए आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, विच इज़ साया केयर की टैगलाइन की टेस्टेड है तो भरोसा है. The thing you have to keep in mind कि बहुत सारी जगह हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे एक ही मैन्युफैक्चरर दोनों एक ब्रांड बना रहा है और एक ट्रेड जेनेरिक बना रहा है, और दोनों फेल हो सकते हैं, दोनों भी सही हो सकते हैं. सो यू हैव टू थिंक कि वो जगह जहाँ बन रहा है ज़्यादातर एक ही होते हैं. लाइक देयर सेट ऑफ WHO GMP मैन्युफैक्चरर्स, और सारे अलग अलग मार्केटिंग कंपनीज के लिए बना रहे हैं, और इस हिसाब से फिर कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है. Because a lot of them fail. They say anywhere 5 to 25% is fake. What do I say to the doctor when they are prescribing me expensive medicine? Is mouthwash also available? Well, I would say don't, like, if your doctor's prescribing you expensive medicine, you don't really have to tell them that you're going to take a tested substitute. You could just take it, upload your prescription, and it will say you can take this and that and this and that. If you feel like your doctor's a good person, then you tell them that you're taking this generic medicine. They might, if they're a good person, they'll be concerned for you. They'll be like, how do you know that it's quality? How do you know it's okay?
In which case, if you show them that this is tested medicine, they'll generally be fine with it. But if it's an individual who is not as good-hearted or someone who's more concerned about how much money they're making, then they will try and scare you. And And then is mouthwash mouthwash also cooling, available? I I have think put it in the is. Yeah. comments. Okay. So you can access it from the comments. Latest comment आप देख लीजिए. Even we could not Even get we could not get. medical syrup and other medicines. I mean, we need to know which syrup you're talking about. We have plenty of syrups, we have plenty of suspensions, we have plenty of solutions, but you need to give us more insight than that. Minoxidil finasteride enriched with redinyl. I have Mm, never it is not seen an redinyl before, so no, we don't. Yeah, sorbitate C ointment. Are you checking Sorbit's that one out? ointment is not available right now. We'll have to check its demand and see if we can get it. It's It's a calcitrol. calcitrol plus clobetasol. Yeah, I don't think we have that. Nizral के लिए substitute पूछा है. Nizral के लिए substitute, we have a substitute for Nizral. Okay. Oh, it's ketoconazole. That one आ नहीं रहा है. Sorbitate C ointment is not available in SciCare. When will it be available? Sorbitate C when we get enough demand for it. It does. I'm not. So there's this calcitrol plus clobetasol. I'm interested in like whether vitamin D3 actually has any antifungal properties or whether it actually helps with clobetasol. I mean, I'd have to check out like the proper sources for that. Yeah. Okay. Mm, Thanks for the previous answer. Thank you. 50 टैबलेट का सैंपल साइज काफी होती है टेस्टिंग एक बैच के लिए कितना percentage? Oh, okay, this is a good question. So for this particular scenario, you're expecting that each tablet that you like test, right? You're expecting that that will be the same as the other tablets that you're testing. That's why the uniformity of weight and uniformity of content is so important. If you find that your tablets are significantly different from each other, then you can't say that this test would be applicable for the whole batch. Then the test would only be applicable for what you have. So really, you don't need that many tablets. If you get 10, 20, 30, 40, that's fine. You just need to make sure that they are equal in weight and uniformity of content with each other. Then you can apply the results you get on 1 or 2 tablets on the whole batch. If they're significantly different in the 50 tablets that you're putting in, then you know that, wait, this batch isn't uniform, and there's no point of just testing a few of these and figuring it out, because what I test on one won't be applicable on all the other tablets there. SciCare कितना percentage sample size test करता है एक batch का? Again, it's not really on the percentage of how big the batch is. It's about whether the batch is uniform with itself or not. And that is exactly what the uniformity of weight and uniformity of content is. Now, if I had a batch of, let's say, 10,000 tablets or 100,000 tablets versus like a million tablets or 10 million tablets, I want to make sure that if I pick out 50 random tablets out of that million or 10,000, that they're all uniform. If they aren't uniform, then my test is only applicable for the thing that I'm testing out. Okay. So oral minoxidil, why not available? I think, yeah, there's recently a New York Times article that just came out about how oral minoxidil could actually regrow your hair for pennies a day. And I think since then it's really become like a trend around. So ये जो चीज है, we don't probably just don't have enough demand for it. If people start demanding more minoxidil 10 mg, then we could probably try and get it. Okay. Then we have content mafia, which is saying SciCare के generally कितने % batches of medicine fail होते हैं हर महीने lab testing में?
percentage of जितने batches testing के लिए जाते हैं. Um, I'm not sure how much I should answer this question. Shivangi, do you want to do this? कितने परसेंट बैचेस फेल होते हैं? Mostly, now we have a Mostly तो relationship with अच्छी होते हैं. suppliers where they know that we are testing our batches. So our batches abhi, after like working in with them for like probably 6, 8, I mean almost over a year now, that is not a big issue for us because Yeah, so when we we test our started, batches very we used to have a lot more batches fail. And the reason is that when you get new suppliers, they think that they can fleece you a little bit. And then also that if you consistently test batches and your suppliers know that they test batches, then they would never actually give you any medicine that they think is tainted because they know that there's a quality check. So, for example, one of our manufacturers, they told us that, look, we can't give you the medicine you need right now. It failed internally. And then we stopped there. But then they didn't give it to us. Whereas if they knew that we didn't check, then they might have just passed it on because the whole cost increased dramatically. So what ends up happening is if you build up a culture of constantly checking, people stop trying to give you low quality products because they know they'll catch you. And we've had to cut off many relationships and cut off many people that we've done business with because they consistently did not deliver a quality product. And इतनी न्यू टेस्टिंग लैब जिसका कोई प्रीवियस खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्यों उसके साथ पार्टनर किया साया केयर ने? um, ये आप जो करंट लैब है, आई थिंक यू आर सेइंग दिस आफ्टर यू हैव चेक द टेस्ट रिपोर्ट एंड द नेम दैट कम्स ऑन द टेस्ट रिपोर्ट, but this lab is not a new testing lab. It has been there for over like 30 years and they have a good track record. They are getting audited like yearly, मतलब monthly by monthly basis उनके बहुत audits होते monthly, रहते yeah, हैं. sometimes they get like 3, 4 audits in like a month. Yeah. So yes, I think they have a good track record, and it's not about partnering. It's just that they are third-party labs, and there are much और भी ऐसे ही third-party labs और available हैं दिल्ली के अराउंड ही, या फिर बाहर भी आप बद्दी वगैरह की साइड चले जाएं तो वहाँ भी. And we similarly can and have partnered with other labs as well. I think that's the end of the questions. Yeah, this is a feature that we should be adding and we will be adding in our application. We are improving the prescription management by help of technology, and we are trying to we get it to a more, give a better user experience to our customers. मैंने अपने गूगल मैप्स में जबरदस्त ऊपर से रिप्लाई करना बंद क्यों किया? सिर्फ 4.4 रेटिंग हो गया, कहीं आगे 2-3 मैंने 3.8 ऐप हो जाएगा. Did we stop commenting on the Google Map reviews? I'm not sure if we did. We can definitely start again. As for the 4.7 to 4.4 rating, I think we'll probably stay consistent around 4.4, 4.5. I think we've been that way for like quite some time right now. We should probably change what's on the website there. But I don't think we'll go down to 3.8. Like our Google app rate, our Play Store rating is 4.6. And usually what we find with ratings is that, there are two types of people. Like people who are really mad at you, they're the ones who rate you. And the ones who, and you can get mad at us because you could get mad at our delivery time. That like we partner with third-party labs, that we don't have all the medicine available, and we have lots of flaws that we are trying to be very transparent about. But even then, like no one's there listening to like, this reason, that reason, this reason, that reason, right? They just care that what my need is that wasn't met at that moment. It doesn't really matter what your effort is. So based on like the current market scenario and the technology and the services that we provide,
I think we'll probably stay around this level until we do some more dramatic shifts, which we're constantly, consistently working upon. But I think we should reply to our comments. Yeah, Thank we you should for definitely reply. content, Yeah, thanks for telling us that. Okay, so if Okay. there are no more questions, then we will wrap up. Yeah, we agree with it. वीडियो टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड लगते हैं. Okay. Can you give us a feedback that how can we make it look more authentic? Because these are like real people that we go to and talk to who actually buy our medicines. Okay. I think we do need. Oh, here. Omega-3 क्यों capsule क्यों कौन नहीं है? We do have an omega-3 capsule. You could check out our 2096. That is an omega-3 capsule. And is there? Yeah, I think that would be the one to take. 2096. 1959. Okay. Thanks for coming, everyone. I think we've had a great session. Mr. Thank you Mitesh so have much. put like the link to the product. You can check that out. Okay. Thank you so much for joining. See you. Yes. Thank you, bro. Thank you, everybody. Bye.